सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो वहाँ दे कैन इजीली डू अ ग्रेट थिंग देयर. Absolutely. So sir, like now since sir आपने SSB दिया है for Army, Navy, Air Force sir. Apart from that, you went to a force which is like half Navy, half paramilitary, and lot of things are there. So sir, how basically like is the testing difference? Sir, आपने सारे SSB boards like आपने assessments देखे, and Coast Guard का सर सुनने में आता है कि थोड़ा अलग procedure है. Sir, how what according to you is the kind of difference, and एज अ कैंडिडेट बहुत सारे लोग कोस्ट गार्ड के प्रति वो नहीं रखते कि हाँ हमें जाना चाहिए या नहीं. तो सर लाइक व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज बेसिकली द सो कॉल्ड आयरनी कि हाँ नहीं जाना चाहते वो लोग. Okay, so first I'll talk about what Coast Guard exactly is. See, in our country, we are having four armed unions of India. Armed unions means जो जब जंग होगी, ठीक है, whenever there will be any kind of war, they will be able to support the nation to protect the nation. So there are four armed unions of India. One is Army, second is Navy, third is Air Force, and the fourth one is Coast Guard. Okay, all of them come under Ministry of Defense, including Indian Coast Guard. ठीक है. Charter of duties थोड़ा सा different है compared to Navy. That I'll come in the later part, how it is different and how it operates differently from Indian Navy. But if you talk about the selection criteria, Army, Navy, Air Force, it's all same. You know, you might have gone for the SSB interviews. So उनका तो combined SSB होता है, you know. Naval board will be, you know, conducting SSBs for Army. Army boards will be conducting for each other's tri-services. Now, Coast Guard का, see, pattern is थोड़ा सा different. Although it has been formulated by DIPR, their assessors are also trained with the DIPR, and सब कुछ same होता है. The only thing is now what they have done is they have instituted a written examination which is known as CG-CAT. ठीक है, वो शायद 200 marks का written examination है, and it's a mix of territorial army and AFCAT. So it's a very basic test. Now if we are preparing for CDS or AFCAT, so that preparation won't be different, I would say, and that is on the common layout. तो उसी में ही वो preparation आपका cover हो जाएगा. Then comes your PSB. Once you clear the written examination, there is a term called PSB. Now PSB is say similar to the screening test. ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट और पीएसबी आपका बिल्कुल सेम है. अंतर क्या है कि जैसे आप पीएसबी अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हो बाकी बोर्ड्स में, तो वंस यू आर स्क्रीन इन यू आर देयर फॉर द रेस्ट ऑफ द 5 days, राइट. हियर व्हाट इज द प्रोसेस, इफ यू गेट स्क्रीन इन यू विल बी कॉल्ड फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस. जो अपना जीटीओ है, साइकोलॉजी टेस्ट है, आईओ है, उसके लिए यू विल बी कॉल्ड सेपरेटली. So those remaining tests will be conducted on a separate date. Other than that, there is no difference. No difference means no difference. Everything is same. If you are preparing for the SSBs, your preparation would be on the same format, on the same lines for your FSB and PSB as well. So this is the selection criteria. And you know, training, if I say, you know, for the medical examinations, whatever the medical examinations are conducted, they are also conducted on the same in the same, you know, institutions like RR है या साउथ में जितना AFMC वगैरह, जो बाकी सब जगह सेम है. And the standards are also the same because once you get selected and once you're in the academy, you'll be trained with the naval counterparts. So every medical criteria and every selection procedure more or less remains the same. Yeah. Yes sir, rightly pointed sir. Sir, now sir, Coast Guard is not like थोड़ा सा उसमें अलग dimension ये आता है कि FSB का जो आपने concept बताया sir. So sir, where all PSBs and FSBs are conducted? Because unlike AFSBs, everybody know AFSB 5 जगह पे होती है, SSB 4-5 जगह पे होती है. वैसे सर PSB और FSBs कहाँ होती है sir? See, PSBs basically there are few centers. One is in Noida, second one is in Mumbai or Goa. Like it depends where the availability is. Third one is in Chennai, and fourth one is in Kolkata. So these four are the main centers where you know, those PSBs are conducted, and it again depends what you know, is the availability of the like Coast Guard establishment. अगर suppose मुंबई में कभी availability नहीं है तो they start conducted in Goa. तो वैसे
These are the four main centers where PSBs are conducted. And FSB, as of now, is only conducted in Noida, which is the Coast Guard Selection Board, I think in Sector 62 or somewhere. So it is always conducted in Noida as of now. Yes, sir. Sir, so like almost all parts of the country, like हर एक coastal areas के पास ही होते हैं, like whatever you pointed, sir. Apart Yeah, from yeah, Noida. yeah. Yes. Basically, see, their main agenda is कि if they have divided into four regions, so जितने भी चार regions के candidates हैं, they can easily come to attend the PSB processes. So that is the main agenda. Yes, yes, sir. सर यस सर सो सर जैसे आपने पॉइंट आउट किया था सर लाइक कोस्ट गार्ड की असेसमेंट भी डीआईपीआर ट्रेन स्टैंडर्ड्स के ही होते हैं सर तो सर लाइक आपने जब लाइक व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी सो डिड यू प्रिपेयर समथिंग डिफरेंट फॉर योर एसएसबीज एएफएसबीज और वाज इट द सेम फॉर कोस्ट गार्ड या कुछ अलग से आपने पढ़ाई करी थी रिलेटेड टू योर सब्जेक्चुअल थिंग्स जो कि बेसिकली लोग सोचते हैं कि हाँ हमें नेवी जाने नेवी के एसएसबी से क्या कोस्ट गार्ड के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या कोस्ट गार्ड में जाने से कैन है ना क्वेश्चन कम फ्रॉम नेवी एंगल एज वेल See, I'll give you a simple example. जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, जॉब इंटरव्यू यू all might have faced somewhere or the other. Now, if you are going to say Google के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यार नेचुरल है. Even consider yourself as an interviewing officer यार. I always say, if you are the interviewing officer and you are interviewing a candidate जो इंटरव्यू के लिए आया है, तो what would be your expectations? आप उससे एक्सपेक्ट करोगे तो यार थोड़ा तो ये सोच के चलोगे ना कि वो बंदा मेरी कंपनी में जॉब के लिए आया है तो उसको मेरी कंपनी के बारे में थोड़ा तो पता हो. ठीक है. Say if Ayush is going for the Coast Guard interview. Okay. Now, the interviewing officer sitting over there, he expects you to know something. I mean, I'm not saying कि आप टेक्निकल चीजें जानो कि शिप में शिप हैंडल कैसे होता है, नेविगेशन कैसे होता है, वो तो आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे. बट basic thing, what is Coast Guard, what are the commands, what are the vessels right now, how many number of vessels, anything that is available publicly over the internet that you can easily go through. ठीक है यार, इंस्टाग्राम में दिन भर रील्स देख सकते हैं, 5 मिनट के लिए थोड़ा कोस्ट गार्ड की साइट पे जाके तो थोड़ा बहुत हम चेक कर सकते हैं ना. तो दैट्स द थिंग. ठीक है. तो they expect you to know basic stuff about Indian Coast Guard or any other services that you're attending SSBs for. So this is the knowledge that you should be having about the services while you're attending for SSBs. yes sir yes sir sir so like while you are preparing for your ssbs for your return for your like sir you were working previously then नहीं क्योंकि सर आपने एनडीए से स्टार्ट किया था जर्नी then you also joined a corporate then again you joined forces sir so sir like how was this transition because many a times there are questions कि क्या हमें जॉब करना चाहिए एसएसबी के प्रिपरेशन के साथ या फिर हमें किसी बोलना चाहिए कि नो वी आर अनएम्प्लॉयड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग सर लाइक व्हाट वाज योर स्टे एंड योर से ऑन दिस सर लाइक बहुत सारे लोग आते हैं कैंडिडेट्स हु आर लाइक कि हाँ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं हम एसएसबी भी जा रहे हैं बट देयर एज इज लाइक क्वाइट सीनियर कि हाँ 25 साल के हो गए हैं बट स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग सो व्हाट अकॉर्डिंग टू योर केस इज देयर सर See, I would say this again depends on individual to individual. ठीक है. But my suggestion would be, if you are a fresh out of college, ठीक है, और कॉलेज में रहते हुए आपने एसएसबी अटेंड कर लिए, see, there is no need to get afraid कि सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, because your college is going on, and at the end of the graduation आपको you'll have to cater for plan B. It's good that you want to join services, but you try to understand the level of uncertainty. आप एसएसबी में जाके आप ये सोच के जाओगे कि आज मैं रिकमेंड होके आऊंगा, इट्स गुड, बट आप हो जाते हो नहीं. कई बार आप स्क्रीन आउट भी हो जाते हो, कई बार आप कॉन्फ्रेंस आउट भी हो जाते हो, एंड कई बार आप मेडिकल आउट भी हो जाते हो. सो उस नजरिए से सोचो, बी प्रैक्टिकल इन अप्रोच. ठीक है. ऑलवेज हैव अ प्लान बी. आई मेड अ मिस्टेक. आई स्टार्टेड गिविंग एसएसबीज राइट फ्रॉम द एनडीए. ठीक है. कॉलेज में भी देता रहा, बट कॉलेज में ये था कि यार कॉलेज के बाद जॉब लग जाएगी, एंड उसके बाद आई थिंक I'll easily get a job और SSB में मैं select हो जाऊंगा. So that was my mistake, my bad. I had bit of overconfidence inside me. So हुआ क्या कि college के बाद what I did, I didn't go for job. Neither I prepared for anything, and neither I appeared for any interview. ठीक है. Now that thing backfired. What happened was I sat for 1 long year completely blank, doing nothing, only attending SSBs. ठीक है. Now
हुआ क्या कि यार जब आप खाली बैठते हो ना, तो आप और थोड़ा डिमोरलाइज होने लग जाते हो, दैट थिंग हर्ट्स नाउ। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर अनसर्टेन है, सॉरी, और वहां पे आप जा रहे हो बार बार, तो रिपीटेडली अगर आप जा रहे हो तो इम्प्रूवमेंट करना, हर एक महीने आपने 2 SSB अटेंड कर लिए, हर एक महीने बाद जा रहे हो, तो आपको इम्प्रूवमेंट का इंट्रोस्पेक्शन का टाइम कम मिलता है, वो विंडो कम होती है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, इफ यू आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, go for a job, ठीक है, start working somewhere. Now what happens is, I'll tell you what the interviewing officer is going to ask you. He is going to definitely ask you one question, that what you are doing right now. And when you say na कि sir, I am preparing for SSBs, I only want to join defense forces, this would be a backfire, ठीक है. Now if you say कि sir, I am working somewhere, I'm supporting my family, I'm living on my expenses, I do not take money from my father, so this is something that projects one of those 15 OLQs that they are looking for, right? So uh, this thing will help you, always start working somewhere, and when you work somewhere you get to learn a lot many things, जो मैंने शायद बिना जॉब करे एसएसबी अटेंड किए थे, एंड आई वाज गेटिंग कॉन्फिडेंस आउट अगेन एंड अगेन, जब जॉब करने के बाद मैंने एसएसबी दिया, दैट वाज द फाइनल एसएसबी इन विच आई गॉट रिकमेंडेड, बिकॉज नोइंगली और अननोइंगली आई वाज लर्निंग समथिंग. जॉब आप करते हो, आप कुछ ना कुछ सीखते हो यार, be it team management, be it your communication, be it your networking, be it your going beyond your working hours and hard working or any kind of side hustle. तो आप कुछ ना कुछ करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, and when you learn, when you imbibe those qualities, same thing gets reflected while you are getting assessed in the SSBs. तो वो अपने आप ही आपकी quality reflect होगी and you will see the improvement. So never sit idle, I would say. uh, you know start working somewhere that will help you reduce your anxiety level, nervousness level, fear level. So that is something that's going to help you. तो आप काम करना शुरू करो, प्लान बी हमेशा अपने पास रखो, इट्स गुड, यू शुड हैव प्लान ए इन माइंड, मेरे को जाना है फोर्सेज में, दैट्स गुड, बट अपने साथ प्रैक्टिकली थोड़ा रेशनली सोच के ऑलवेज हैव अ प्लान बी. सो दिस वुड आई वुड सजेस्ट के हाउ यू शुड गो थ्रू. And sir, this even applies for candidates who take drop after their 12th. उन लोग की भी काफी दिक्कत आती है सर, लाइक दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईज एंड फाइनली है ना दे एंड अप इन प्राइवेट, सो उनको भी काफी बैकफायर आते हैं कि आपने किया क्या एक साल. एंड समटाइम्स इंटरव्यू ऑफिसर डिग्स डीप डाउन एंड फाइनली वो कैंडिडेट प्रे बन जाता है सर. तो सर लाइक आपका क्या सजेशन रहेगा कि अगर एक कैंडिडेट अगर आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए ब्रेक ले रहा है या फिर एनडीए प्रिपरेशन की ब्रेक ले रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट मेकिंग इट due to some instance or something like that, and still he is going for his 10+2 BTech entries or TES entries, तो उनके लिए हमेशा ये दिमाग में आता है कि यार आई वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर बिकॉज एसएसबी में ज़्यादा टाइम लग गया. तो लाइक अगर ये क्वेश्चन आता है तो हाउ दोज कैंडिडेट शुड गो फॉर इट. See, when you newly pass out of 10+2, and when you newly graduate from the college, these are two separate things, these are pole apart situations, ठीक है. आप जब 12th के बाद आप ड्रॉप लेते हो, तो आपको पास एक ऑप्शन होता है कि यार अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, एनआईटीज में नहीं हुआ, तो आई वुड बी एबल टू गेट इनटू सम डिसेंट कॉलेज एंड आई कैन कंटिन्यू से, मुझे बीटेक करनी है तो मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा, ठीक है. लेकिन जब आप कॉलेज से निकलते हो, उस टाइम पे व्हेन यू आर फ्रेश ग्रेजुएट, तो आपने एक साल का ड्रॉप ले लिया. उसके बाद when you apply for different jobs, the companies keep asking you कि यार आपने ड्रॉप क्यों लिया, आपने क्या किया, ठीक है. And the situation becomes different. Some companies are there which don't even prefer your candidature when you apply for their roles, when you are having a gap after graduation. So this thing is practically different. Now when you are after 12th, आपने अगर gap लिया है, तो आई वुड से कीप टाइम फ्रेम इन माइंड. मुझे एक साल का गैप लेना है, मुझे एक साल मेहनत करनी है, एक साल बाद नहीं हो तो मैं दूसरे साल नहीं लूंगा, ठीक है. क्योंकि मुझे क्या करना है कि यार एक साल में ही मेरे पास टाइम है, मुझे इसी में ही अपना बेस्ट देना है, एफर्ट्स डालने हैं, दिन रात एक करना है, उसमें दिन रात एक कर दो यार. उसमें फिर बोलते हैं ना, मिलावट मत करो, डोंट मिक्स दैट घूमना फिरना एंड ये सब. एंजॉयमेंट का लेवल कम कर दो, हार्डवर्क का लेवल ज्यादा कर दो, बस. उस टाइम पे आप यही सोचो कि आपका हो जाएगा. और एक साल के विंडो में कुछ मत सोचो, नहीं होता है, गो फॉर द सेकंड ऑल्टरनेटिव, प्लान बी. होता है, अपना एसएसबी के प्रिपरेशन कर ही रहे हो साथ में. एसएसबी के यार क्या कोई ऐसा स्पेशल नहीं चाहिए होता प्रिपरेशन यार. आई वुड से अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो दिन में 8-10 घंटे, तो 1 घंटा और खींच दो यार, दैट्स मोर देन एनफ. चाहे इंडिया के लिए करो, सीटीएस के लिए करो, दीज टेस्ट आर
आई एम टेलिंग यू दीज टेस्ट डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रिपरेशन. एक दो घंटे की मेहनत, इफ यू आर वर्किंग जुडिशियसली, दैट हेल्प्स यू अलॉट. सो आई वुड से अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ, प्लान बनाओ. फौज में भी आपको यही सिखाया जाएगा जब आप फौज में जाओगे, तो यार मेक प्लान्स. ठीक है, प्लान ए बनाओ, प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी फॉलो करो. ठीक है, कीप योर बैकअप. तो एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड. अपने डायरी में लिखो, पेन एंड पेंसिल उठाओ, उसमें लिखो मुझे ये करना है, ये टारगेट है, ये टाइमलाइन है. सो दिस थिंग हेल्प्स अलॉट. Yes, sir. Rightly pointed, sir, from your service experience. With this, sir, like we also wanted to know regarding your service life, sir, because sir now आपने तो sir फौज का सपना देखा था, but you went to Coast Guard, sir, which is again फौज sir proper like है नहीं, but still है ना वही kind of things, वही environment. So sir, like how is Coast Guard like according to एक basic service just कैसा है like as from your knowledge experience, sir? Like it is how it is from गुड फॉर लाइक अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ वेरी सिविलियन बैकग्राउंड या फिर वो फोर्सेस के बैकग्राउंड से कोस्ट गार्ड में जा रहा है. ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ कोस्ट गार्ड लुक्स लाइक. ठीक है, कोस्ट गार्ड इज अ very beautiful service, I would say. Why? Because there are ample opportunities. ठीक है, छोटी सर्विस है. Number of personnel enrolled in this service are not very much, unlike army, navy और air force, जो आपका number of active personals हैं वो बहुत कम है. So जब लोग कम होते हैं ना, तो you get ample chances to project yourself, your personality, your capability. ठीक है. Second thing, I'll come to the training part. Now when you are selected, when you are deemed medically fit, जब आपकी merit list आती है, your training starts with the Indian Naval Academy and with the Indian Navy. Everything, right from Indian Naval Academy to the sub courses to the specialized courses, everything is conducted with your naval counterparts. The rules and regulations, the uniform standards, the legal issues, and the establishments you share, officers' mess, canteen facilities, everything is similar to Indian Navy and other forces. ठीक है. The only difference comes is, अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर कोस्ट गार्ड में ना एमएसपी नहीं है, पैसा कम है बाकी सर्विसेज से रिलेटेड में. सो यू नो व्हाट आई टोल्ड हिम वाज कि यार सी, इफ यू वांट टू जॉइन फोर्सेस, देयर आर टू थिंग्स. आइदर लुक एट द मॉनेटरी एस्पेक्ट और यू लुक एट द अदर पर्क्स. ठीक है, आपको चाहिए क्या? आपको पैसा चाहिए, डोंट गो फॉर द सर्विस. पैसा चाहिए तो यार प्राइवेट जॉब में बहुत पैसा है. ठीक है, बाहर आप बहुत कमा सकते हो. लेकिन अगर आपको अलग से लाइफस्टाइल चाहिए, हर दिन आपको चैलेंजिंग चाहिए, आपको चाहिए कि यार आप कुछ स्पेशलाइजेशन करो. ठीक है, और यू गेट दोज स्पेशल कोर्सेज एंड डाइविंग कोर्सेज, या यू वांट टू जॉइन स्पेशल फोर्सेज, जॉइन फोर्सेज. ठीक है, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी. जो आप सोच रहे हो कि आपको पैसा कमाने के लिए जाना है, पैसा कमाने के लिए फौज में नहीं जाता लोग, कोई भी आदमी. ठीक है. सो कोस्ट गार्ड बेसिकली, मैंने जैसे बताया, एवरीथिंग इज सिमिलर टू इंडियन नेवी एक्सेप्ट द एमएसपी जो मिलिट्री सर्विस पे है, वो कोस्ट गार्ड में इंक्लूडेड नहीं है. दैट्स द ओनली डिफरेंस आई वुड से. यू नो, और एडवेंचरस लाइफ है. यस, इट प्रोवाइड्स यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज. आप मेरिट लिस्ट में अंदर अच्छा करते हो तो यू आर trained in the naval establishments, same, you go for diving courses, you become divers, and that's the beauty of coast guard. And again, if you do good in sub courses और अंदर जाके सर्विस में अच्छा करते हो, तो you can also opt for aviation. Coast Guard operates different kinds of aircrafts, right from choppers like Cheetah and ALH Dhruv and Dorniers. So now also they're just expanding exponentially. तो अभी Coast Guard का ऐसा है कि यार बहुत exponentially grow कर रही है. Aircrafts, vessels, new hovercrafts, they are being inducted into Coast Guard. So yes, I mean it's a beautiful service. So look at the services from a different angle. आपको चाहिए क्या? आपको यूनिफॉर्म मेमोरी तो यार पैसे की मत सोचो. ठीक है. So this is the thing. Yes, sir. Yes, sir. Sir, like you pointed regarding training aspect कि सर नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ में होती है. सर, so like on a lighter note, sir, you also है ना did your training in Indian Naval Academy अडीमला. So sir, like आप कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स की कितने मंथ की ट्रेनिंग रहती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, लाइक
लाइक आर दे ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सो कॉल्ड, हमारी एक बहुत फेमस कप होती है, बख्शी कप जिसे बोलते हैं सर, सो आर दे ऑल्सो पार्ट ऑफ इट सर? सी द बेसिक कोस्ट गार्ड में जब आप एकेडमी में जाते हो तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इज ऑफ द एनओसीज, जो नेवल ओरिएंटेशन कोर्स होता है, दैट इज फॉर द 6 मंथ्स, 22 वीक्स जो होता है उनका टाइम पीरियड। द बेसिक कोर्स, सॉरी, यू डू विद द नेवी एंड द नेवल काउंटर पार्ट्स, नेवल अकेडमी। उसके बाद यू अगेन गो टू डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। जैसे आपका टेक्निकल ब्रांच है तो यू गो टू नेवल टेक्निकल स्कूल्स। अगर आपका जनरल ड्यूटी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है तो यू गो फॉर द शिप ट्रेनिंग, जो 1 TS बोलते हैं, जिसको वन फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो कोची में है, उसमें आप ऑन बोर्ड शिप्स में जाते हो, उनके नेवी के साथ ही ट्रेनिंग करते हो। सो द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग इज सिमिलर। ठीक है, तो नेवी के साथ ही इट्स एवरीथिंग इज सिमिलर यार, आई वुड से। आई मीन वो बस रैंक्स का डिफरेंस है, एमएसपी का डिफरेंस है, एंड जो नेल्सन रिंग की जगह वहाँ पे स्टार्स होते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। यस सर, सो लाइक कोस्ट गार्ड के मेडिकल डॉक्टर्स भी होते हैं सर, सो हाउ डू दे एंटर सर, लाइक एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट? बिकॉज या सर वो एएफएमसीज के थ्रू जाते हैं या फिर दे हैव समथिंग कि आउटसाइड बाहर से एमबीबीएस करके या ऐसा कुछ? कोस्ट गार्ड शिप्स के ऊपर दी डॉक्टर्स और दी मेडिकल गाइड्स, जो एमआरस होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं डॉक्टर्स के, दे द कोस्ट गार्ड डजंट एनरोल फॉर दी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस वाले, जो अलग से उनकी एंट्री नहीं होती है। दोज गाइज फ्रॉम नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जो अपना टेन्योर पूरा करके आते हैं, जैसे नेवी में है सपोज कोई आर्म फोर्सेस के डॉक्टर, तो वो डेपुटेशन पे आते हैं। देयर इज नो स्पेशल कोस्ट गार्ड ऑफिसर ऑन बोर्ड। those officers remain the same. Either they will be like those who are serving for the navy, like उनका ऐसा रहता है कि कुछ टाइम तक वो आर्मी के लिए कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद शायद वो सर्विस चेंज कर सकते हैं। तो all those naval doctors are sent on board the coast guard ships on deputation. So there is no separate entry for the coast guard doctors. यस सर, रियली ग्रेट सर। सर सो नाउ सर, आपने जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन किया पहले, लाइक यू वर इन अ कॉर्पोरेट डोमेन, देन यू गॉट रिकमेंडेड, देन यू जॉइन सर्विसेज, देन यू सर्व फॉर सम इयर्स एंड अगेन यू केम टू कॉर्पोरेट। सर सो हाउ वाज दिस ट्रांसिशन फ्रॉम ए टू बी देन बी टू ए एंड और एल्स ए टू बी और बी टू सी सर? लाइक काफी लोग इस ट्रांसिशन को ले नहीं पाते या फिर काफी लोग इस ट्रांसिशन को अलग तरीके से देखते हैं। सो सर हाउ, व्हाट वाज योर टेक ऑन दिस सर? Okay, so I would say यार जो मेरा जो पहला जॉब था, that was more or less similar to the armed forces. I mean, I don't know how many of you might have heard about this Reliance Group of Security Services, which hires the NCC guys. ठीक यस है, and it hires the security officers all across the India. उनका एक अलग से इतना टेस्ट है, and वो SSB की तरह ही कंडक्ट होता है by retired military officers, and उनकी अलग से academy है जहाँ पे सारा वो आपको आर्म फोर्सेस की तरह ही उनकी ट्रेनिंग है, एक्सेप्ट फॉर द आर्म्स एंड एमुनिशंस। ठीक है, तो आई वाज लकी, यू कैन से कि मुझे शुरू से ही वही एनवायरनमेंट मिला, इवन जॉब में भी। तो 1 साल मैं ट्रेनिंग ही कर रहा था। आई मीन आई वाज लाइक 6 महीने मैंने हार्ड कोर ट्रेनिंग की है वहाँ पे। उसके बाद 6 महीने में ये अपना जामनगर ऑयल रिफाइनरी में था वहाँ पे। तो इट वाज, वहाँ पे माहौल ही सेम है, वहाँ पे सारे ऑफिसर्स के अंडर में आप काम कर रहे हो, एंड जितने भी फौजियों के साथ ही काम किया मैंने शुरू से। सो उसके बाद मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। तो जब मैं इतना ट्रेनिंग करके गया तो यार एकेडमी की ट्रेनिंग मुझे बहुत इजी लगने लगी थी। आई मीन लाइक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे जितने भी टेस्ट थे वो क्लियर कर दिए, एंड तो ये था। बट आई विल टेल यू, इफ आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट्स, corporates are, my friends, ruthless. ठीक है, corporates are very different. I mean, the culture that you find in armed forces, जो आप एक ब्रदरहुड आपका होता है ना आर्म फोर्सेस में, कि यार इसके लिए ये मेरा कोर्समेट है, मैं इसके लिए जान तक दे दूंगा। ठीक है, जंग के मैदान में अगर मेरा ये सिपाही है तो ये इसको कुछ होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है। कॉर्पोरेट्स आर वेरी डिफरेंट। यहाँ पे आपको when you enter, I mean, I don't know how many of you are working or are going to work somewhere in corporates. यहाँ पे एक अलग रेस चल रही है। ठीक है, यहाँ पे अप्रेजल्स की रेस है, यहाँ पे प्रमोशंस की रेस है, यहाँ पर यू नेवर नो द एनिमीज। बोलते हैं ना कि फौज में यू नो द एनिमीज बिहाइंड द लाइंस। ठीक है, कॉर्पोरेट्स में यू डोंट नो, यू डोंट
you're not able to figure out whether the enemy is sitting next to you or he is sitting having tea or coffee with you. So that's the major difference. So other than that, when you come out of military, जो आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज एज अ फौजी, वो कहावत है ना कि यू कैन टेक अ मैन आउट ऑफ मिलिट्री बट यू कैन नेवर टेक अ मिलिट्री आउट ऑफ मैन. सो वही चीज है यार, दैट थिंग विल आई थिंक कंटिन्यू फॉर अ लाइफ लॉन्ग टिल माई लास्ट ब्रेथ. आई थिंक वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी. तो वेर एवर यू गो, आपकी क्वालिटीज वो रिफ्लेक्ट होके आएंगी. एंड वन ऑफ द गुड पार्ट्स इज व्हेन यू आर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, कॉर्पोरेट में आपको थोड़ा सा अलग रिस्पेक्ट मिलता है कि हाँ यार, ये बंदा आर्म फोर्सेस से, तो यार ये कुछ भी कर लेगा, इसको मैं ये टास्क दूंगा ये भी कर लेगा, ये दूंगा ये भी कर लेगा. सो दैट इज हाउ आई एम ट्रीटेड in my current organization also. So yeah, that's the amount of respect you earn through the armed forces tag. Yes. सर लाइक सर नाउ सर आपने जैसे बताया कि कोस्ट गार्ड में ऑफिसर्स आते हैं सर, लाइक सो व्हाट आर द एंट्रीज फॉर वुमेन सर? डू दे आल्सो राइट द सेम एग्जाम, सेम थिंग, और इज देयर एनीथिंग स्पेशलाइज्ड थिंग फॉर देम? uh, they entries for women officers are, one is your aviation. ठीक है. द जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स जो होती हैं वुमेन, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है, उसमें दे कैन अप्लाई. सेकेंड इज दे कैन गो फॉर एविएशन. इफ यू आर द सीपीएल होल्डर, सपोज आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो आप जा सकते हो. अदर देन दैट टेक्निकल ब्रांच में भी जैसे है कोस्ट गार्ड में, इफ यू आर इनटू दिस थिंग जो अगर टेक्निकल है उसमें आप जा सकते हो. एंड अदर एंट्रीज, तो वंस द कॉमन एंट्री पाथ इज यू गो थ्रू द सेम प्रोसेस, आप जनरल एंट्री के थ्रू एंटर कर सकते हो एज अ वुमेन, एंड उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. ठीक है. नाउ द good part is like women are right now not as of now, like they were not being posted on ships. जो आपने सुना होगा अभी नेवी में भी क्या है कि warships में women are being posted, which is a good sign of progress, I would say. तो कोस्ट गार्ड में भी तो ये बहुत पहले से हो रहा है. होवरक्राफ्ट्स होते हैं कोस्ट गार्ड के वेसल्स, वुमेन ऑफिसर्स वर ऑलरेडी डिप्लॉयड, दे वर पेट्रोलिंग ऑन बोर्ड होवरक्राफ्ट्स, वो पाकिस्तान आईएमबीएल बॉर्डर के पास. सो कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं है. कोस्ट गार्ड में यू आर अ वुमेन ऑफिसर, यू विल बी पोस्टेड ऑन बोर्ड होवरक्राफ्ट्स, और जो आपका बेस अपॉइंटमेंट है या जो भी है. सो यस, और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते आते रहते हैं. यू कैन गो फॉर द जनरल एंट्री एंड दे लेटर ऑन यू कैन स्पेशलाइज. आइदर यू कैन बिकम एन एविएटर, or you can become a hovercraft pilot, or you can go in the technical branch. Yes, sir. Rightly said, sir. Sir, so now since you were a Coast Guard officer, sir, and more importantly, you were in a branch, sir. So we would like to know what branch you were in and what kind of challenges does that branch faces. And more importantly, जो आपके counterpart branches है, which is almost the same of Navy, जैसे executive, electrical engineering, अदर ब्रांचेस, तो उनमें और इनमें कितनी सिमिलैरिटीज होती है फ्रॉम नेवी एंड आर्मी आपके कोस्ट गार्ड के सर? Okay, so as I said कि ट्रेनिंग तो सबका सेम है. ठीक है. ड्यूटीज भी सबकी सेम है. नाउ आई वाज द पार्ट ऑफ जनरल ड्यूटी ब्रांच, जो नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बोलते हैं. नाउ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या होता है कि यू आर मोस्टली पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स, क्योंकि आपका काम ही वही है. नाउ कोस्ट गार्ड में क्या है कि यार डिफरेंस मेजर एक है कि कोस्ट गार्ड सेल्स अलॉट. कोस्ट गार्ड ना सेलिंग बहुत करता है. आई मीन उसके डे टू डे ऑपरेशंस इतने सारे हैं कि यू विल नेवर फाइंड अ डे बोरिंग. ठीक है. कभी आपको लगेगा कि यार रेस्क्यू ऑपरेशन आ गया, कोई फंसा हुआ है, यू विल हैव टू गो आउट एंड रेस्क्यू द लाइफ एट सी. और जैसे जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स में भी वेरियस बाइफर्केशंस है, क्योंकि एक शिप होता है, यू नो, it plays a lot of different roles. The entire ship's company, जो टीम होती है on board, there are various roles. For example, navigating officer है. Navigating officer is responsible for navigating the ships. उसको ships को direction देना, कहाँ जाना है, मैप पे कोर्स पूरा चार्ट करना. These are the responsibilities. Second thing is gunnery officer. Now Coast Guard ships में भी आपका warships की तरह cannons होते हैं, various arms and ammunitions are there, hand grenades are there, various rifles are there. So उनका सबका arms and ammunition का recharge जो responsible होता है, that is the gunnery officer. Then you have a separate officer called a regulating officer, which is responsible for all the regulating affairs, जैसे ship में कौन छुट्टी जा रहा है, क्या क्या rules and regulations है, legal implications है, ये सारा होता है. Logistics is there. Log officer plays an important role for all the जितने भी सारा सामान आ रहा है ship में, या पूरा जितना भी बाहर जा रहा है procure करना है कुछ. These are various roles. शिप्स में बेसिकली सी एंटायर शिप्स कंपनी वर्क्स टुगेदर. जितने भी रोल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक आदमी सारे काम कर रहा है तो यार दूसरा कुछ नहीं कर रहा है. हर टाइम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग सम और द अदर एक्टिविटी ऑन बोर्ड शिप्स, तभी शिप चलता है. एक फैमिली की तरह होता है.
यू नो इट्स नॉट लाइक आप खाली बैठे हो एंजॉय कर रहे हो, ऐसा नहीं होता शिप्स में। yeah. Yes. Sir, so now, sir, you told regarding Coast Guard and different branches, sir. So, sir, like, what was your like कि सर जैसे होता है ना कि हम जैसे नेवी में जाना चाहते हैं या किसी को आर्मी में कि हाँ आर्टिलरी जाना है, सो व्हाट वाज योर लाइकिंग ऑफ कोस्ट गार्ड सर? वाज इट जीडी जनरल ड्यूटी फ्रॉम स्टार्टिंग और वाज इट फ्लक्चुएटेड बाय योर सो कॉल्ड वैकेंसीज और समथिंग लाइक दैट सर? सी आई वुड से जब आप जनरल ड्यूटी से जाते हो ना एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, तो यू हैव लेस चॉइसेस। आई मीन आपको ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे। एज अ जूनियर ऑफिसर तो आपको यार सब करना है। थिंक आपको ये भी मिलेगा, आपको गनरी ऑफिसर की ड्यूटी भी करनी है, आपको नेविगेशन भी करना है, तो सब करना है। आई मीन पर्सनल बेसिस पे माय इंक्लिनेशन वाज ऑलवेज टुवर्ड्स अ गनरी ऑफिसर व्हिच आई परफॉर्म्ड लाइक ऑन बोर्ड माय शिप। तो यू नो दोज आर्म्स एंड एम्युनिशन, जब आप सबका अपना अपना इंक्लिनेशन होता है। सी इफ यू लाइक नेविगेटिंग एंड ऑल दैट चार्ट प्लॉटिंग वाला, तो यू विल प्रेफर नेविगेशन। I used to prefer gunnery वाला domain because I used to like firing and ये सारा arms and ammunition का जितना भी rifle hand grenades वगैरह था, so I used to have an inclination towards them. That's why I preferred gunnery वाला thing. So अलग अलग roles हैं, अलग अलग आपको चेंज होते रहते हैं रूल्स। इफ यू आर नॉट इन स्पेशलाइजेशन, आपको अगर आपने स्पेशलाइज कोर्स नहीं किया है तो, सो दैट्स द लाइक एंटायर गेम ऑफ रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। Yes. Sir, now, like, sir, these like there are candidates who go for SSB, and there are a lot of persons who mentor candidates. Sir, like, उन सबके routine में there are a lot of things which they need to change in their day-to-day routine. So, sir, what were your day-to-day changes, or what were the things which you followed during your course of preparation, which significantly helped you to be consistent and finally making it to the forces, sir? ओके, सो सी आई वुड से ये ना सब डिपेंड करता है कि आप किस चीज में वीक हो या आपको किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऋषभ इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, कुमारी माइट बी गुड एट डूइंग एंड डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, या रनिंग और पुशअप्स और सिटअप्स इसमें, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल का जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होता है। यू नीड टू फोकस ऑन योर वीक पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, ठीक है। नाउ a lot of people keep texting me, सर हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या हम लोग एसएसबी क्लियर कर सकते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो आई ओनली टेल देम कि सी इंग्लिश इज ओनली द क्राइटेरिया, ठीक है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो यार हिंदी मीडियम से बच्चे जो जाते हैं वो तो कभी सिलेक्ट ही नहीं होते, वो तो कभी ऑफिसर्स ही नहीं बनते, है ना। तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि आपको इंग्लिश में ही सब कुछ करना है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ऐसा नहीं है अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में नहीं बात कर सकते हो। आई आई हैड मेनी फ्रेंड्स यार हु केम फ्रॉम हिंदी मीडियम, and now when you look at their vocabulary, they speak so fluently that they can beat any guy from a convent school, you know. So that is something that you need to work upon. आप पहले फिगर आउट करो आप किस चीज में इंप्रूवमेंट आपको जरूरत है। आपको अगर अगर एंड कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक, अगर आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है यार, एसएसबी में क्या है, इट्स अ टेस्ट ऑफ ए पर्सनैलिटी, ठीक है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर इंग्लिश, कितना तेज इंग्लिश बोलते हो या कितना तेज हिंदी बोलते हो। दे आर लुकिंग आपके अंदर जो पर्सनैलिटी है, क्या वो आप एक्सप्रेस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब से अनीश से पूछा कि यार टेल मी कि इफ यू एनी सिचुएशन वेयर यू हैव नेवर गिवन अप। नाउ अनीश इज लाइक बता ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इंग्लिश अच्छी है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है कि यार कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी नहीं थी जिसमें मैंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन द ग्रे एरियाज। मेक अ लिस्ट, पेन और पेपर उठाओ, उस पर लिखो, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, लिखो कि यार ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, इस पर मेरे को काम करना है। एंड इट्स वेरी इजी यार, इट्स वेरी इजी, अभी तो ये है कि यार हमारे टाइम में तो इंटरनेट का इतना स्कोप नहीं था। अभी देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। दे हेल्प यू, दे गाइड यू, देर आर मेंटर्स, a lot of mentors who will help you in improving your various qualities. So focus on that part. And I would say routine, obviously routine बना लो तो बेटर रहता है यार। if you are going like कहीं भी जा रहे हो इधर उधर, तो that doesn't work, ठीक है। रूटीन से आपको कंसिस्टेंसी आती है।
I'll tell you my story. When I was preparing, I was so much focused. I used to get up 5:30 in the morning. I mean, आज भी मैं 5:30 का ही अलार्म है मेरे फोन में इतने सालों से. I get up daily at 5:30 only. That those times also I used to get up. I used to go for running. I used to do a lot of workout. Then I used to work on the written examination का part. I used to introspect. सब करता था. So that is something that you need इन योर लाइफ. फोकस तभी आता है, कंसिस्टेंसी तभी आता है जब आपके अंदर एक पागलपन होता है. ठीक है, वो पागलपन ढूंढना जरूरी है कि मुझे ये करना है तो करना है. एंड नथिंग इज टफ यार, आई वुड से नथिंग इज टफ. Yes, sir. Rightly said, sir. Nothing is tough when you are a defense aspirant, and defense aspirant only makes everything possible, sir. Because बाकी aspirants तो बाकी चीज करते ही हैं, ये लोग हर चीज कर लेते हैं, चाहे यहाँ पे करें या बाहर करें. Like एग्जैक्टली. sir, you are excelling in forces as well as you have also excelled outside as well, sir. तो sir now सर जैसे आपने एसएसबी दिया, काफी सारे एक्सपीरियंसेस लिए, तो सर व्हाट इज द बेस्ट मोमेंट विच यू कैन ऑलवेज लाइक फ्लैशबैक हो जाता है कि हाँ मुझे बहुत मजा आया, वो मेरा एक ऐसा अटेम्प्ट होता है लाइक सर बीइंग अ रिपीटर या रिकमेंडेड, हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो रिपीटर वाला वो अटेम्प्ट बहुत अच्छा था और उसमें आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी या बहुत अच्छे मेमोरीज गैदर करे. सर आपके टाइम स्केल में या आपके ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी में ऐसा कौन सा टाइम था या क्या मोमेंट थी जिसमें आपको अभी भी चेरिश करते हो आप? ओके, सो आई थिंक यार मेरा फर्स्ट एस एस बी, आई मीन दैट इज समथिंग दैट आई स्टिल चेरिश. होता क्या है कि पहले एसएसबी में आप जाते हो तो आपको पता है आपके पास एज भी है, आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी है, नहीं भी हो तो कोई टेंशन नहीं है अगले में आ जाएंगे. क्योंकि बाकी विद द नंबर ऑफ अटेम्प्ट यू गेट नर्वस. तो पहले एसएसबी में तो आप जाते हो एंजॉय करने. ठीक है, कि 5 दिन का यार सरकार दे रही है खाना पीना एकोमोडेशन फ्री का, तो टेंशन नहीं है. ठीक है, दबा के खा के आएंगे ब्रेड जैम और बटर. तो मेरे माइंड में तो यही था. तो ये जॉब, और फिर ये होता है कि फ्रेशर्स का ना थोड़ा टेंशन कम होती है. फ्रेशर्स को, रिपीटर्स को आप देखोगे ना तो इधर उधर घूमते रहते हैं, लिखेंगे, ये बोलेंगे, पढ़ते रहेंगे, रात में जगते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं. उनको चाह थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, नर्वसनेस होती है. फ्रेशर्स वाले का अलग बैच होता है, अलग एकोमोडेशन होता है, तो वहाँ पे यार दे कीप एंजॉइंग. तो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन दिस एएफएसबी जो अपना देहरादून में है. आई थिंक फर्स्ट एएफएसबी देहरादून में. वी वर अ बंच ऑफ फ्रेशर्स एंड हम लोग पूरा जैसे लिबर्टी मिली तो अपना टेस्ट वेस्ट खत्म करके जैसे ही स्क्रीनिंग हुए और शाम को निकल गए देहरादून घूमने. एंड हम लोग आए वापस एंड रात में नींद नहीं आ रही है तो हमने जोर जोर से ना गाने वाने गाने शुरू कर दिए. एंड हमें क्या पता यार, यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि यार इतना यू नो यहाँ पे कट ऑफ टाइम ये है कि 10:30 बजे या 10 बजे लाइट्स ऑफ है, सबको सोना है, ये वो. हमें लगा हॉस्टल चल रहा है यार यहाँ पे. तो स्टार्टेड सिंगिंग एंड वी स्टार्टेड लाइक घूमना, इधर उधर घूम रहे हैं रातों में. देन वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स वेयर लाइक पासिंग बाय एंड ही केम एंड उसने फिर जो बजाया है सबको कि ले गए वो बाहर हमें वहीं पे ग्राउंड में. एंड ही वाज लाइक, आओ तुम्हें मैं बताता हूँ फौज में कैसे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो उन्होंने एज अ फन 5-6 राउंड लगवाए एंड सेड नाउ यू स्लीप, नाउ यू विल नॉट शाउट एट नाइट. तो वो चीज़ ऐसी है कि अभी तक याद रहती है. क्योंकि एकेडमी में तो यार दिन रात हम भागते ही रहते थे. तो वो चीज़ सीखने को मिलती है. प्लस आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि यार जो दोस्त हैं, जो एसएसबी में जो दोस्त होते हैं, पहले एसएसबी के दोस्त आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे. सो that is something that I always cherish. Yes, sir. That's really nice, sir. And we all have some or the other memories. किसी ने कुछ तोड़ दिया, किसी ने कुछ चिल्ला लिया, कुछ कर लिया, Yeah, and finally sometimes बैच वॉश आउट हो जाती है सर ये सब करते करते तो. सर आप yeah, yeah. आपने कोई बैच वॉश आउट फेस किया है सर? बैच वॉश आउट मेरे केस में आई डोंट थिंक हुआ है. आई थिंक एक ना एक तो कोई सेलेक्ट हो ही जाता था, जो छुपा उस्तम निकलता था एंड लास्ट में पता लगता है यार ये भी था क्या पूरे बैच में इन 5 दिनों में. तो यस सर. हो जाते थे यार, एक दो सेलेक्ट हो ही जाते थे. बैच वॉश आउट नहीं हुआ कभी. सर लाइक लास्ट एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर, नाउ आप सर जब रेकमेंड हुए आफ्टर सो लॉन्ग अटेम्प्ट, कभी कर सर जैसे हम जब काफी अटेम्प्ट किया रेकमेंड होते वो मोमेंट पहले वाले मोमेंट से ज्यादा लगता नहीं है. लाइक पहले अटेम्प्ट वाली जो खुशी होती है कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में रेकमेंड हो गया, बहुत एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. 16th अटेम्प्ट या 12th या 13th या 10th अटेम्प्ट किया तो वैसा वाला जोश या उमंग रहता नहीं है सर. एंड इसके अलावा सर नाउ व्हेन यू गॉट कमीशनड, वो दोनों एक ऐसे मोमेंट्स थे कि हाँ लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे एंड जनरेशंस कमिंग अप वो भी याद रखेंगे. तो सर लाइक व्हाट वाज योर फीलिंग दैट टाइम एंड हाउ डू यू रिकलेक्ट दोस डेज ऑफ Okay. रिकमेंडेशन एंड योर पीओपी सर? Okay, so first I'll come to recommendation. See, I I mean sometimes that memory clicks in my mind.
अभी भी सुबह सुबह दैट स्टक मी समवेयर कि जब मैं रिकमेंड हुआ था, माय चेस्ट नंबर वाज 7 एंड होता क्या है यार, जब आप फ्रेशर एज ए रिकमेंड होते हो ना, क्योंकि जब हमारे बैच में देवर लॉट मेनी कैंडिडेट्स हु गॉट रिकमेंडेड, आई थिंक 7 or 8 गाइस गॉट रिकमेंडेड, और उसके बाद उसमें फ्रेशर्स भी थे एंड रिपीटर्स भी थे। तो फ्रेशर्स का रहता है कि यार रिकमेंड हो गए तो दे विल बी लाइक एकदम से यस, ये एकदम चिल्लाएंगे जोर से, एकदम ऐसा लगता है कि वहीं उनकी पासिंग आउट करा दो। तो वो उनका जोश होता है। इट्स इट्स गुड, आई मीन ठीक है, एंजॉय करना चाहिए। बट इतने सारे फेलियर्स को देखने के बाद जब आप सिलेक्ट होते हो, जब आपका चेस्ट नंबर कॉल आउट होता है, तो वो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप इतना फेलियर झेल लेते हो, जब आप इतने सेटबैक्स और फेलियर्स को देखते हो लाइफ में, तो आपको ना, जब आप सक्सीड हो जाते हो, जब आपको सक्सेस मिल जाती है, तो आप जमीन पर ही रहते हो, आप उड़ते नहीं हो ज्यादा। क्योंकि आपको पता है मैं कहाँ से आया हूँ, मैं ग्राउंड से उठा हूँ। ठीक है, मुझे पता है मैं स्टेशन पे रात में सोया हूँ, चादर बिछा बिछा के सोया हूँ, जनरल डिब्बों में आया हूँ वापस, और बहुत स्ट्रगल किया है, दिन रात रोया भी हूँ, ये भी किया है, बहुत कुछ किया है। तो वो सारे एकदम से फ्लैश बैक्स हो जाते हैं मेमोरी के। तो उस टाइम पे आप बोलते हो बेटा शांत रहो, अभी जर्नी लंबी है, रिकमेंडेशन इज नॉट द ओनली पार्ट, क्योंकि उसके बाद मेडिकल भी होता है। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट भी आती है, और उसके बाद आपको एकेडमी भी जाना होता है। तो सेलिब्रेट, आई वुड आई वॉन्ट से कि डोंट सेलिब्रेट योर सक्सेस, सेलिब्रेट, बट जमीन पे रहो। सो आई वॉज ग्राउंडेड। ठीक है, मेरा ये था कि ओके, हो गया, मैंने घर पे फोन किया, हो गया, घर वाले अलग लेवल की खुशी थी। मुझे पता था अभी लंबी जर्नी है, अभी बहुत कुछ है, मेरिट लिस्ट है, मेडिकल से सब कुछ है। uh, तो ये था मेरा रिकमेंडेशन का सिनेरियो। नाउ कमिंग टू द पासिंग आउट परेड, यार इतने पापड़ बेले थे एकेडमी में। आई मीन मेरा ये था कि यार मेरे लिए ट्रेनिंग टफ नहीं थी, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू सम दिस ग्रिलिंग वाला कोर्स जो भी था। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं अपने कोर्समेट्स को ही बचाता रहा, उनके लिए पनिशमेंट खाता रहा, उनके लिए ही हमेशा आई वाज अप फॉर देम। तो मैं अभी भी मतलब अपने कोर्समेट में इसलिए जाना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये बंदा था, इसने सबके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट खाई है। सो एंड लिटिल लिटिल मूवमेंट्स, यार आप 24 घंटे साथ रह रहे हो। मेरा जो बडी है, ही इज पोस्टेड समवेयर, एंड वी स्पीक अ लॉट अबाउट दोस मेमोरीज, वी चेरिश दोस मोमेंट्स। तो पासिंग आउट में यार यही रहता है कि पासिंग आउट का था कि पेरेंट्स आए, दे वर सिटिंग इन द परेड ग्राउंड, और सारे पेरेंट्स वहीं होते हैं परेड ग्राउंड में। बट द गुड पार्ट इज आप ट्रेनिंग कर करके इतने टैन हो जाते हो कि वहाँ पे व्हाइट यूनिफॉर्म में और सारे लोग ना सेम लगते हैं। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नहीं पहचान पाते। तो मेरे पेरेंट्स को पता नहीं लग रहा था मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इट वाज लाइक व्हेन एवरीथिंग परेड वाज डन, सब कुछ हो गया, तो जो स्टार्स लगाने के लिए जब पेरेंट्स आते हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स को देख रहा हूँ, कहाँ गए यार ये लोग, दिख नहीं रहे, वो मुझे देख रहे हैं, कहाँ गया ये, दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनको सब सेम लग रहे थे। तो लास्ट में कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगे हैं उनको पूरे हॉल में देखने के लिए कि अच्छा ये यहाँ पे बैठे हैं। देन यू आर लाइक यू नो obviously that becomes an emotional moment for your parents and for you as well, when इतने अटेम्प्ट्स के बाद या जब भी आप सक्सेस हासिल करते हो, जो स्टार्स लगाते हैं वो, इट्स लाइक यार आई थिंक आई हैव गिवन बैक टू माय पेरेंट्स वॉट एवर देयर स्ट्रगल्स आर। जितना भी उन्होंने मेहनत किया बचपन से मुझे पालने में, बड़ा करने में, मेरी एजुकेशन में इतने स्ट्रगल्स लिए, दैट हैज फाइनली फुलफिल्ड, वो अब हो चुका है, उसको मैंने किसी ना किसी तरह बहुत छोटे फॉर्म में ही सही रीपे किया है। तो दैट हैप्पीनेस एंड दैट मोमेंट ऑफ स्माइल ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, वो हमेशा रहेगी। आई थिंक वो टिल लास्ट ब्रेथ तक भी रहेगी। तो दैट इज समथिंग, ये दोनों चीज़ों का। यस सर, राइटली सेड सर। वो रिकमेंडेशन की जर्नी और है ना वो ग्राउंड में या रहने का दर्द, वो सब एक पार्ट एंड पार्सल है विच एवरीबॉडी शुड नो। अदरवाइज सर, बोलते एब्सोल्युटली। हैं ना, खुशी में अगर आप आसमान में हो तो दुखी में आप फिर पाताल लोक में जाने में ज्यादा देर नहीं लगती या फिर। सर तो with this, like sir, we really had a great session with you. And sir, now we ask all our audience to directly put their questions by raising their hand, or else put their question on chat box, so that sir directly आपके queries ले सकें personally। and अगर आप लोग को पूछना है प्लीज। any questions, any queries, any candidates, या सर से कुछ पर्सनल चीजें पूछनी है तो आप वो भी पूछ सकते हो। सर इज ऑल्सो गुड लाइफ मेंटर। सर काफी अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं इंस्टाग्राम में, एंड बीइंग अ रेगुलर है ना फॉलोअर ऑफ हिम,
काफी अच्छे अच्छे चीजें जानने को समझने को मिला लाइफ के बारे में। और सर इज ऑल्सो गुड गिटार प्लेयर। सर कभी हमें भी क्लासेस अगर मिल सके तो दे देना। नहीं नहीं, बिल्कुल यार, बिल्कुल। आई वुड से व्हेन यू स्पोक अबाउट गिटार एंड यूकेलेले, आई नेवर लर्नड इट। मैंने कभी सीखा नहीं है। आई ऑलवेज हैड इन माइंड कि यार मुझे ना थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। सो आई जस्ट लर्नड इट टू प्ले इन द लॉकडाउन। तो बस थोड़ा थोड़ा बजाते गए, अपने आप ही आ गया वो। मतलब दैट इज समथिंग दैट इज अ साइड हॉबी। या ये, या निकिता, आई थिंक शी वांट्स टू आस्क समथिंग। क्या निकिता को है? Yes. Other than technical or direct entries in coast guard, is there any exam, written exam? What is there? What is it? How to get into it? For you are asking about direct entry. For coast guard, only direct and written also. What is the written exam? So there is no direct entry for officers. Whether you have to join in the technical branch or in the general duty branch, you have to go through a common test, that is CG CAT. ये आई थिंक पिछले एक साल में ही अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इन ड्यूरिंग आवर टाइम्स देयर वाज नो रिटन एग्जामिनेशन। देयर वाज लाइक द टेक्निकल एंट्रीज जो आर्मी में होती हैं, यू अप्लाई एंड यू गेट अ कॉल थ्रू योर कट ऑफ परसेंटेज। तो वैसे था, अभी यू विल हैव टू गो थ्रू द सीजी कैट एग्जामिनेशन। एंड सीजी कैट, एज आई सेड, is a mixture of AFCAT and territorial examination. That is a very, very basic and a fundamental test. If you're preparing for AFCAT and other examinations, you will find it pretty easy to clear. Yeah. There is a question from one of our student. He is Mr. Nikhilesh Kumar. He is going for his ACC entry. Sir, Yeah. while on interview, interviewer throws a rapid fire on me, and I was not able to answer more than 3 to 4 questions. How much it matters? It matters a lot, because I also used to forget the series of questions. I believe they ask you around 5 to 6 set of questions where it becomes pretty difficult for you to remember. Now, what you do is, there's a trick, I'll tell you. जब वो 5 से 6 क्वेश्चंस आपके ऊपर थ्रो करते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, try to catch the keyword. For example, how they start. Okay, gentlemen, tell me something about your educational background. Keyword education. आपने टिप्स पे रख लिया, ठीक है. Second, and then I would like to know about your family, who all are there in your family, what they do, and whom you are close to. Second, आपने क्या कर लिया? Family. Keyword देख लिया. Third, he'll ask you about what are your hobbies and what you like to do in your pastime. Hobbies आपने कीवर्ड दिया. तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उसमें से आप कीवर्ड उठाओ. अब कीवर्ड्स आपको एक एक तो याद करना है, फिर तो क्वेश्चंस का मतलब ही नहीं है. वो क्वेश्चंस क्या है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर थ्रोज एट यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना आपके अंदर जो है ग्रैबिंग कैपेबिलिटी, आप कितनी ग्रैब कर सकते हो चीज़ों को. आपको कुछ बोला गया तो आप कितना माइंड में रिटेन कर सकते हो. तो वैसे आपको वो कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चंस याद करोगे तो इट्स नॉट अ ह्यूज टास्क. या Sir, Ayush has a question. Hello, sir. या So I wanted to ask you, sir, from the beginning of the interview, you said that you really had a love and a obsession for a uniform. So, sir, can you please elaborate on that? Like, where did you get this obsession from, or what was the source of this obsession? ओके. सो आयुष, when you give so number of attempts, I'll tell you a life lesson. You should know the difference between, and not only you, each one of us should know the difference between being desperate and being passionate. ठीक है. Obsession is equivalent to desperation. ठीक है. जब आप किसी चीज के लिए ऑब्सेस होते हो ना, तो आप प्रैक्टिकलिटी भूल जाते हो. ठीक है. यू आर लाइक, मुझे करना है, मैं सोचूंगा नहीं, ये करना है तो करना है, जो होगा देखा जाएगा. ठीक है. डोंट गो इनटू दैट ऑब्सेशन वाला जोन. पैशनेट बनो. उस चीज के लिए आप पैशनेट रहोगे तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग प्रैक्टिकली. आपको चीजें समझ आएंगी, आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समझ आएगी. ठीक है. आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज समझ आएगी. ऑब्सेशन में ना आपको ये नहीं समझ आता क्या नहीं करना है. ठीक है. व्हेन यू आर पैशनेट, यू विल बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट एज वेल. तो आपको जब समझ आ जाएगा कि यार मेरे में ये कमियां, मुझे इंप्रूवमेंट करना है, तो दैट विल गो विद द फ्लो, और आप अपने अंदर जो चेंजेस है ना वो खुद ही देखोगे. ठीक है. सो
आई वुड से स्टार्ट राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि यार मुझे क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे से कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर व्हेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्स मी कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन फोर्सेस, तो मैं क्या बोलूं। तो यार देखो, सबका अपना अपना एक रीजन हो सकता है, ठीक है। फाइंड आउट दैट रीजन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन फोर्सेस। इज इट बिकॉज योर पड़ोसी एंड योर चाचा का लड़का और एनी कजन हैज ज्वाइंड, आपको भी ज्वाइन करना है, रेस लगी है? नो। or is it that you need to join it by your heart, you are listening to your heart, there is a specific reason, मुझे यूनिफॉर्म से प्यार है, मुझे कुछ स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे सरकार, कुछ भी हो सकता है यार, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि मेरे पास प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी नहीं है। यू से इट, बट यू से इट विद कॉन्फिडेंस। सो दैट इज द लेवल and that is the passion you should have for achieving anything, not only ssb, anything in life. Sir, I had one more question. Yep. That what was the mindset or the attitude, sir, that made you persevere through so many SSBs? Mindset, I would say यार, only one thing, कि जब तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, डू नॉट गिव अप। ठीक है, अपने साथ प्लान बी है, मेरे पास जॉब है, आई एम सिक्योर्ड, बट इफ I am getting the call letter for SSB. If my company is allowing me 5 days of leave to go and attend the SSBs, why shouldn't leave? Why should I leave my SSB? And why should I not go and attend and miss out on my chance of getting recommended and join the forces and fulfill my dream? तो जब मेरा माइंडसेट है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ कई लोग थे यार जो 7-8 अटेम्प्ट्स के बाद बोल गए थे कि यार शायद मैं फौज के लिए बना नहीं हूँ, अब नहीं होगा मुझसे। तो यार उनको ये था कि यार अभी तो अटेम्प्ट्स हैं, अभी तो एज है, क्या पता तुम्हारा 7-8वें अटेम्प्ट में तुमने गिव अप कर दिया, 9th अटेम्प्ट में तुम्हारा लिखा था रिकमेंडेशन, क्या पता तुम अच्छा परफॉर्म करके हो जाता। सो यू नो कीप गोइंग यार। वही मैंने बोला ना, एज अ 5 दिन की छुट्टी लेके यार एंजॉयमेंट करने चले जाओ, क्या दिक्कत है, क्या पता आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और आप रिकमेंड हो जाओ। तो डोंट गेट नर्वस, वो माइंडसेट लेके चलो। टू थिंग्स, वन इज डोंट गिव अप, सेकंड डोंट बी नर्वस, दैट्स इट। Thank you, sir. सर लाइक देर इज ऑलवेज वन थिंग, लाइक एक चीज ये भी आती है आजकल क्वेरीज में कि दोज एनडीए कैंडिडेट्स या जो 10+2 के लिए जा रहे हैं, ऑफिसर्स आस्क देम कि यार दीज डेज अग्निवीर भी है, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर इट, जवान वाली एंट्री ट्राई कर लो, सेलर्स कर लो अगर आप इतना ही ट्राई कर रहे हो। तो सर व्हाट वुड बी योर से ऑन दैट क्वेश्चन सर, लाइक हाउ शुड दे हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? ओके, सो बेसिकली होता क्या है ना कि जब आईओ आपसे ये पूछता है कि हाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस, आई विल टेल यू जनरली कैसे आता है। क्योंकि व्हेन ही आस्क्स कैंडिडेट्स के व्हाई यू वांट टू जॉइन फोर्सेस, सो सम पीपल से कि आई वांट टू सर्व माय नेशन, ठीक है। Then he cross questions you, yaar, you can also serve the nation by joining the Agniveer entry or becoming a sailor or becoming an NCO, ठीक है, why only officers? तो बच्चे वहाँ ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ they are not able to justify why you want to join as an officer. Now your reason can be anything, for me I think when I was asked this question, क्योंकि my family had only one officer, and rest of them were like all the non-commissioned, in the armed forces. So I had कि मुझे फैमिली से मैं फर्स्ट ऑफिसर बनना चाहता हूँ, देयर इज नो कमीशन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस, सो आई वांट टू जॉइन एज एन ऑफिसर। सो यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई, एंड नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू whatever you say, that should be like, बोलते हैं ना फौज में, एकदम खटाक से आपका आंसर तैयार होना चाहिए। ये है तो ये क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। यू शुड बी रेशनल, यू शुड बी साउंडिंग प्रैक्टिकल, हर एक चीज का रीजन होना चाहिए। सो आई मीन ये टैकल करने के लिए यही होना चाहिए कि यार ऑफिसर मैं ज्वाइन करूं या मैं अग्निवीर में ज्वाइन करूं। अभी मैं ग्रेजुएशन में हूं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, सो आई थिंक इफ आई कैन बी एट द ऑफिसर लेवल, तो व्हाई नॉट ट्राई फॉर द ऑफिसर लेवल, सिंपल। ऑफिसर में नहीं होगा तो मैं अग्निवीर करूंगा, हमको सर्व करना है नेशन को, सिंपल। Rightly said, sir. Reasoning ability wala factor is very much applicable here, sir. या Yes, sir. There are two more hand raised. Go ahead, Priti. Good evening, sir. Sir, like you got recommended into 16th attempt. So, sir, as per you, what are the common mistakes that we candidates do in the SSB due to which we are not able to get recommended? ओके, सो प्रीति, one of the major mistakes that candidates do is they listen to the myths and rumors first thing। जैसे मैंने एक मिथ बताया था कि उनको वहीं जज करना शुरू कर देते हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिथ्स जो एसएसबी में चलता है। डोंट गो बाय एनीथिंग, go there, listen to the assessors, what they are saying, what they are expecting out of you,
simply go by their instructions. जब वो instruction दे रहे हैं तो don't go here and there, उनकी instructions को follow करो. Second thing, if any recommended candidate is there, you know, आपको बहुत लोग गाइड करेंगे. If any recommended guy is there and he's, आपने उससे पूछा है तो रिकमेंड कैसे हुआ. See, this is not a viva exam. ठीक है, जब आप वाइवा में जाते हो तो आप जो देके आता है उससे पूछते हो ना कि तेरे से क्या पूछा, कौन सा क्वेश्चन पूछा, तो मैं भी उसी का वो आंसर दूंगा तो मेरे को भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. इट्स नॉट अ वाइवा एग्जाम. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ टेस्ट ऑफ ए पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी उस बंदे से डिफरेंट है जो रिकमेंड हुआ है. सो डोंट गो बाय देयर आंसर्स के. अब जैसे ये क्वेश्चन था दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन एज एन ऑफिसर, आपके लिए हो सकता है वो आंसर कुछ डिफरेंट हो, आपके लिए वो रिक्वायरमेंट अलग हो. सो यू नीड टू फिगर आउट आपके लिए क्या एप्लीकेबल है. वट एवर इज एप्लीकेबल फॉर यू, यू नीड टू से दोज आंसर्स. सो डोंट गो बाय द आंसर्स जो बाकियों ने दिए और सिलेक्ट हो गए. उनकी पर्सनालिटी अलग थी, आपकी पर्सनालिटी अलग है. So that is the thing. So there are two things. One, don't go by the myths, and second, don't go by the answers of the recommended candidates. Find your answers. Find your personality. That's it. Rutvika also had a query. Rutvika, go ahead. So, good evening, sir. Hi. Yeah. So, so what were the things that in the first attempt you were not able to recommend it, or means not the failure, but it was the learning. So what things you kept in mind after the SSB, or after you didn't get recommended? So what things you inculcate in yourself, and so what things we should also improve in ourselves to be prepared for the interviews and SSB. Okay. So this on a funny note, this question used to be asked by the interviewing officer every time when I used to enter the cabin. Okay, why were you not recommended in your previous attempts? So see, I will tell you. I know my weaknesses. For a lot many attempts, including my first attempt, you know, what happens is despite of being able from despite of being from an English medium school, India में क्या है कि English medium schools हैं लेकिन वहाँ हम English बोलते नहीं है. ठीक है, so that's a separate thing. So my vocabulary was not that good. ठीक है, at that point of time. Now जब आपकी vocabulary अच्छी नहीं है and you are expecting कि आप यार English में जाके बहुत अच्छा communicate कर रहे हो, so I was not able to project myself. I was not able to project my true personality over there. जब मैं ये नहीं बता पा रहा कि मैं अंदर से क्या हूँ, मेरे responses क्या रहेंगे, how will I react in certain situations, तो obviously how will the assessors give me the marks, or how will they assess me? So that was my weakness. And gradually over a period of time, as I told you, when I started working, that things and the entire atmosphere taught me a lot. उससे मेरा क्या हुआ कि vocabulary भी अच्छी हुई, communication skills अच्छी हुई, networking अच्छी हुई, and in that way I was able to project myself. So that was applicable for me. For you, there might be separate area of improvement which might be required for you. So focus and try to find that area of improvement which you need to improve upon. So that will be different for each and every one of you. Thank you, sir. Sir, one more thing, sir. Like Yeah. these days, a lot of candidates go here and there for coaching, go here and there for guidance, go here and there for recommended talks, whatnot, sir. And sir, we also are with the system so-called CULTSSB, and we are also running an initiative, sir. So, sir, like what kind of words which you would like to give us as a suggestion? Because we, as a team of whole recommended team of twice, thrice, fourth time with the 13 to 14 people, including some retired officers along with us in the team. So, like, what kind of suggestion or things which you would like to suggest to the students, or what kind of things they should take us from here so that they can work on that? All right. So see, the first thing that I would like to say is that Pallab, you and your team is doing a great job. Okay, it's not easy to actually show the right path to traverse upon to the candidates who are passionate about joining forces. ठीक है, इतना आसान नहीं है क्योंकि सबको गाइड करना होता है, सबको समझना होता है. Now coming to the suggestions that I would like to give to your team is कि focus on their personality. I know, I mean, you are having the retired officers, they would also be telling you the same thing. Okay, help them build their personality, project themselves. And obviously, if you, I think, see,
right now what's happening is there are hundreds of candidates, hundreds of people over the internet who are uh, guiding students for SSB. ठीक है. And some of them are like मैं repeat था मैं भी guide कर देता हूँ. ठीक है. तो you need to find the right mentor. ठीक है. आप right mentor ढूंढो, आप उससे बातचीत करो. You will be able to understand कि यार you know क्या ये सही बंदा है मुझे गाइड करने के लिए. If he is able to guide you properly, if he is able to uh, make you understand the nitty gritties या जितनी भी चीजें हैं एसएसबी से रिलेटेड, ही इज गुड फॉर यू. सिंपल. आपको खुद ही पता लग जाएगा यार, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. यू ऑल ऑफ यू ऑन दिस कॉल टुडे आर matured enough to understand things and people as well from your life experiences, from your work experiences, etc. So only suggestion, focus on their personalities, try to hone their personalities. क्योंकि जब अपनी पर्सनालिटीज को प्रोजेक्ट करेंगे ना किसी असेसर के सामने या पूरे इंटरव्यूइंग प्रोसेस में, एंड दैट विल हेल्प देम इन गेटिंग रिकमेंडेड. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार आई ऑलवेज से दिस थिंग कि यार इट्स नॉट अ रिटन एग्जामिनेशन कि आपने टिक मार दिए चार थिंग, इट्स अ टेस्ट ऑफ अ पर्सनालिटी, दैट्स इट. Yes, sir. Yes, sir. Rightly said, sir. Thank you so much, sir. And any other queries, any other questions any candidates have in this meeting? If you have any queries, sir. Okay, thank you. All right. Okay, Ayush, again, go ahead. Sir, can you recommend us some books on the defense, like which you would really recommend us to read before going to SSBs or even before joining the defense? So are you talking about the particular SSB interview or uh, books related to armed forces? Yes, sir. Okay, so Books books related to armed forces, sir. okay, so see there are many books, many books. Uh, Go try to read this General Dillon's book, which has been launched recently. कितने गाजी आए कितने गाजी गए, that's a good book. Try reading Rachna ma'am's book. He is Rachna Rachna Bist. Vishrawat. Yeah, Yes. Rachna Bist Rawat. She writes good books. I mean, there are some books. Other than that, she's a good author. Read Rizangla. Rizangla is a book which has been written by a retired Coast Guard officer. So that was also again a good book. Um, One more book is the Brave, again by the Rachna ma'am. So Brave is a good book, and there are many ample books are there. You know, um, you can read any of them, यार. I mean, more or less they will teach you the same thing, same attributes. सारे फौजीज की लाइफ स्टोरीज हैं, सारे फौजीज को एक ही चीज सिखाई जाती है, एक ही ट्रेनिंग से गए हैं, एक ही बैटल फील्ड होता है, एक ही सिचुएशंस होती हैं. So go through these books one by one, you learn a lot. So, do you know any books which you can recommend on the Ghazi attack or on the attack of Karachi Port? Attack of Karachi Port, I'm unable to recall. Yeah, there's a book by Admiral. Uh, I am not able to recall. I have read that book, यार. उसका that's based on the 1971 that पूरा war के ऊपर है. I'll let you know that book ना. Just text me. तो Yes, sir. उसका नाम है. Sir, Operation X. Maybe not Operation X, यार. I have forgotten the name. Let me check. I think I. That was. Admiral SM Nanda. Yeah, Nishant. Yeah. This was the book that was written by him. Yep. Operation X. A Man Who Bombed Karachi. Yeah, a memoir. Yeah. So it was written by Admiral SM Nanda. So you can read it. It's a good book that will teach you a lot of things. Sir, I actually had one more question Please, related to your please. Yeah. career actually. Sir, Yeah. did you ever come across any confrontation with smugglers or sea pirates or something related to that? And if you did, so what did you exactly do in that scenario? Not Okay. asking for location details or anything. All right. So
We basically, as a Coast Guard, as a force which is into search and rescue operations, basically Coast Guard is meant for peacekeeping, purpose. So it doesn't directly go into the war, but what it does is it goes by the intelligence inputs. So basically, what we did was, like the ship I was on board, so we used to get a lot of intelligence inputs कि यार यहाँ पे ये suspicious activity हो रही है, इस zone में हो रही है. So there was one input which we received, and right after 26/11, Coast Guard and Navy, all of us are very, very alert. Any kind of suspicious activity is reported, we go in minutes for tracking them, for chasing them, and this is what we did. So I remember we received an input that was a Sunday routine. Sunday routine means सबका छुट्टी होता है. दो तीन officers on board होते हैं who are in charge of the ships. Rest all of them were enjoying in Goa, where I was posted last. जैसे इनपुट आया within I think 1 hour, कुछ लोग नॉर्थ गोवा में थे, एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग साउथ गोवा में थे, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे. 1 घंटे के अंदर सब लोग शिप की जेटी पे खड़े थे, रेडी टू कास्ट ऑफ. दे वर ऑन बोर्ड एंड वी स्टार्टेड सेलिंग एंड लुकिंग आफ्टर दैट सस्पिशियस बोट. एंड हम लोगों ने गोवा से शुरू किया, नीचे गए, रत्नागिरी से होते हुए पूरा मुंबई पहुंचे, मुंबई से पूरा गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ, कंबट, पूरा IMBL बॉर्डर तक, पाकिस्तान तक गए, वहां पे पेट्रोलिंग किया, एंड देन वी केम बैक. It was a 15 days continuous grilling sailing, I would say. So these kind of operations you get to, be the part of when you are in Coast Guard. Sir, as a Coast Guard officer, sir, what is your point of view when the Taj attack happened from waterways? Because all the terrorists came from that way only. And as an officer, sir, how did you feel about it? Like, were Okay, we lacking in our defenses, or should we have prepared better, or something? again, see, whatever I have read from various, I would say agencies, and wherever I have interacted with some officers also who were part of that mission, it was a loophole from our side as well. You know, uh, there was some loophole. There was a miss from our side, our forces, our intelligence agencies. That's why those guys were able to, infiltrate and come across via the waterways. Okay, and they say that we learn from our mistakes, right? गलतियों से सीखते हैं. And right after 26/11, Coast Guard and Coast Guard's role grew exponentially. Right from 26/11, new vessels were inducted, vacancies were increased, patrolling was increased, coordination with different agencies like IB, RAW, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके साथ इंक्रीज हुआ. एंड उसके बाद से लेकर आज का तारीख है, ठीक है. आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जितने इक्विप्ड हैं और जिस लेवल से हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग दिन रात निगरानी कर रहे हैं, दोबारा ऐसा कुछ होने वाला है. क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने देखा है हम लोग करते थे पेट्रोलिंग, देयर इज नो चांस यार. नाउ तो देयर इज नो चांस. गलती हो गई, अब कोई चांस नहीं है. Yes, sir, rightly said, sir. या We have two more questions. या प्लीज Okay, प्लीज. Oh, Monali. Monali, sir. So, so my question is, being from the non-army background, how can we answer the question why I want to be a armed force officer? Okay, so How can we Kumari, answer this question? basically, again I said that answer might be different from what my perception is, ठीक है. So find out that reason कि आपको फोर्स ज्वाइन क्यों करनी है, ठीक है. एक रीजन सबका होता है. जो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्यों ज्वाइन करनी है, यू विल अंदर से आपको एक योर हार्ट विल से व्हाई आई वांट टू ज्वाइन फोर्सेस, यू विल बी एबल टू जस्टिफाई इट. फिर चाहे मैं आपको कितना भी घुमा लूँ, कितना भी ग्रिल कर लूँ, ठीक है. सो फाइंड आउट दैट आंसर एंड see if obviously reasons can be many. क्या मेरी फैमिली से कोई नहीं है, आई वांट टू बी द फर्स्ट ऑफिसर, आई वांट टू बी द फर्स्ट ऑफिसर टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस, और आई वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. मेरा एक सपना है, मेरा एक गोल है. Anything, I won't comment on that because that answer can be different again depending on your rationalization, your personality. So try to find out that answer. Only thing I would recommend is जो आंसर आप बोलो वो जस्टिफाई करना होगा आपको. दैट शुडंट बी आप उसमें बोल रहे हो नहीं नहीं ठीक है, अगर नहीं कर पाई तो मैं कुछ और ऐसे करूँगी. तो दैट शुड बी सॉलिड आंसर.
Yeah, Rishabh. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, like it's my question from since a very long time, and each and every time when every new speaker comes over here, they always speak out one particular line that personality is needed over there. Sir, in you are got recommended your 16 attempts, and you learned each and everything from your rest 15 attempts. Sir, what as per you is the correct definition of personality, and how can a person works on that to make that particular kind of personality? Okay, so आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, व्हेन यू गो थ्रू द इंटरनेट देयर आर 15 ओएल क्यूज, राइट? पता है, सबको पता है, ठीक है। 15 ओएल क्यूज में बहुत सारी चीजें हैं कि से your communication skills, your I'm just telling you, never giving up attitude, your time management, or your coordination, your leadership skills, etc. वो सारी चीजें मिलके एक पर्सनालिटी बनाती है, ठीक है। नाउ what personality is, see, if you are able to distinguish between what is right, what is wrong, that is your personality, ठीक है। मुझे पता है मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूँ, रेड लाइट है, मुझे रुकना है, ठीक है। एक आदमी है जो उसको क्रॉस कर देगा, वो उसकी पर्सनालिटी है, बिकॉज ही लव्स ब्रेकिंग द रूल्स। यू आर नॉट, बिकॉज यू नो that I have to be abiding by the rules, I have to be the good citizens of India, this is my moral duty, ठीक है। that's your personality. लीडरशिप स्किल्स, क्या आप किसी ग्रुप में जा रहे हो, आप अपने ग्रुप के बारे में सोचते हो या अपने अपने बारे में सोचते हो? से फॉर एग्जांपल आप कमांड टास्क में हो, या फिर आप जो अपना फुल ग्रुप टास्क होता है, एफजीटी या एचजीटी जो भी होता है, उसमें आप जा रहे हैं, तो उसमें आप खुद ही आगे आगे बढ़ रहे हो, आप आर यू टेकिंग योर ग्रुप अलोंग विथ यू? दैट्स योर पर्सनैलिटी। आपके पास कोई सिचुएशन दे दी यार, आपको बोला कि आपके सामने 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, वो एक किसी बूढ़े आदमी को मार रहे हैं या किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, क्या करोगे? भाग जाओगे वहां से या फिर आप उसके लिए लड़ोगे? हाउ वुड यू रिएक्ट? दैट्स योर पर्सनैलिटी। सो हाउ यू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस, वो आपकी पर्सनालिटी फॉर्म करती है, ठीक है। ना कि ये कि उसने क्या किया मैं भी वैसे करूंगा, वो पर्सनालिटी नहीं है। योर पर्सनालिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सो हाउ यू रिएक्ट इन सर्टेन सिचुएशंस and whether you are able to distinguish between right and wrong, that is your personality. This is all about personality. Yes, sir. Thank you so much. Got the answer, sir. I will definitely work upon it. Sir, one more question Yeah. adding on this. Sir, like every time, like whenever we speak and we sometimes we take motivation from YouTube in intrinsic motivation and extrinsic motivation, both factor works. But sir, whenever we cite a particular timetable or notes to do what to do list, that works only for 7 to 8 days, and rest of that we all like the consistency does not get maintained. Sir, how to be focused on that? Okay, I have recently started hitting the gym, ठीक है। मैं अपने 15 साल से, पिछले 15 साल से आई एम ओनली डूइंग रनिंग एंड पुशअप्स एंड सिटअप, वही फौजी वाले जो अपने बेसिक पीटी होती है, ठीक है, उसी से मैं फिट था। बट आई स्टार्टेड हिटिंग द जिम बिकॉज आई सफर्ड फ्रॉम एन बैक इंजरी, तो अभी मेरे को स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, क्योंकि अब 30 प्लस हो जाते हैं तो थोड़ा उस फेज में आ जाते हो आप। नाउ व्हाट हैपेंस इज, when I go to the gym in the morning, आई बिलोंग टू द आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड, मुझे पता है 5:30 या 6 बजे मुझे जाके वहाँ टक से पहुंच जाना है, ठीक है। बट देर आर अदर गाइज वो सिविलियंस, ठीक है, दे आर ऑल्सो देयर, वो सुबह सुबह आते हैं, दे आर 40 प्लस, सम ऑफ देम आर 45 प्लस, 50 प्लस, 6 बजे आके यार अपना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पूरा जितना भी एक्सरसाइज है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसे आती है? आप कभी सुबह नहीं उठे हो, टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, 5:30 बजे आप, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5:30, 6, 7 जितने भी आप उठते हो, 10 बजे, 11 बजे, आप सिर्फ 15 दिन, 10 दिन, मैं कहता हूँ 10 दिन आप 7 बजे सुबह उठ के देखो या 6 बजे सुबह उठ के देखो, अलार्म लगा के देखो, 11वें दिन आपकी आंख खुद खुलेगी, ठीक है। 11वें दिन आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना वैसी सेट हो जाएगी कि यार अभी मैं नहीं उठाऊं तो मेरे को अंदर से कुछ हो रहा है, मेरे को अभी उठना है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू आउट। तो कंसिस्टेंसी वहां ही टूटती है जहां आप गिव अप कर देते हो। आपने 10 दिन तक आपने फॉलो किया, 11वें दिन आपका मन कर रहा है नहीं यार आज, ठीक है, एक दिन का ब्रेक ले लिया, कोई बात नहीं यार, 1-2 दिन हो जाता है मिस, लेकिन अगेन गो बैक टू दैट ट्रैक, फिर फ्लो मेंटेन करो। तो जब आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, जब आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा, तो यू विल ऑलवेज गो बैक टू दैट फ्लो कि मुझे वही करना है, वही टाइम टेबल फॉलो करना है, मजा नहीं आ रहा है। बिकॉज नाउ व्हेन आई डोंट गो टू द जिम ना, फॉर द लास्ट 15 years आई एम वर्किंग आउट डेली, ठीक है। तो नाउ व्हेन आई डोंट गो फॉर अ रन, नाउ व्हेन आई डोंट स्वेट, अंदर से मुझे ही बोलती है बॉडी यार कर ले भाई, वरना पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। सो दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू आउट। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एंड सर लाइक जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को कैसे उसमें थोड़ा चाहिए था व्हाट्स योर हॉबी? consistency। व्हाट्स योर हॉबी?
सर हॉबी साइकिलिंग और ट्रैवलिंग है। साइकिलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग डेली नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ साइकिलिंग कर सकते। साइकिलिंग, पढ़ रहे हो, बोर हो रहे हो, बाहर चले जाओ, ताजी हवा, साइकिलिंग का टूर मार के आओ, जो करना है करो। गाने गाओ, गाने सुनो, मूवीज देखो, दोस्तों से बात कर लो, और बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेके कर लो, तो कंसिस्टेंसी अपना ही बन जाएगी। लेकिन पढ़ते टाइम कीप योर फोन्स असाइड, कीप योर फोन्स इन साइलेंट, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द फोन्स और रील्स और एनीथिंग लाइक दैट। फोकस, उस टाइम पे फोकस करो, उस टाइम पे कुछ मत सोचो। दैट वुड बी द अल्टीमेट की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन इट। श्योर, हैव अ गुड डे सर। यू टू। Pallab, you are on mute, I think. Sir, there is another question from Vaibhav. Vaibhav, Yeah, go yeah, ahead. Vaibhav, please. Hello, sir, and hello to everyone. Yes. Sir, I have a question. How a sailor become an aviator or a submariner? How a sailor? You are asking about a sailor? Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. Vaibhav, when you are in service, you as a sailor also get chances for attending SSBs and for becoming commissioned officers. For example, in Navy and Coast Guard, whenever entries come up, whenever notifications come up, you are eligible, same as the counterparts. Now it depends on your commanding officer, on your duty officer on boards, whether they allow you, depending on your availability and leave, to go for the SSBs. And rest of the procedure is same. You have to appear for all those tests. You have to appear for the IO, psychological test, GTO, everything. And later on, you again go and train with these officers. For army, it's a bit different. Army के लिए ACC होता है, entry होता है. There you again, depending on the formalities, you go and you take the proper permission from your officers, and then you attend the SSBs. SSB is same for each and everyone, be it a civilian or a non-commissioned officer. सर बट इन नॉन कमीशन सर सेलर्स में सर थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा है एज कम्पेयर टू एक सिविलियन जो एग्जाम क्लियर करके जा रहे हैं। वो डायरेक्ट uh, एसएसबी देंगे और इधर सर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सी आई से प्रोसेस इसलिए लंबा है क्योंकि आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती हैं, है ना। इट्स नॉट लाइक आपने अप्लाई किया और नॉर्मल कैंडिडेट की तरह आपने जाके टेस्ट दे दिया और आप एसएसबी के लिए चले गए। ऑफिसर बनने के लिए एसएसबी तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन जो प्री फॉर्मेलिटीज हैं एंड पोस्ट फॉर्मेलिटीज हैं रिकमेंड होने के बाद, दे टेक अ बिट लॉन्ग बिकॉज again, as a part of the service, depends on availability, depends on your officers whether they are allowing you or not, and अगेन क्राइटेरिया आपको फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें डिपेंड करती हैं। अदरवाइज एसएसबी इज सेम फॉर ऑल। इंटरव्यू तो आपको देना ही पड़ेगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, जीटीओ देना पड़ेगा, वो सब देना पड़ेगा। या सर फाइन सर, थैंक यू। Another question from Rutvika. Rutvika, mute. तो सर अभी आपने बोला कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। So sir, in this SSB attempts, 16 attempts, and also in the service, you have come across many candidates and officers, senior officers and junior officers. तो सर आपने क्या उनकी गलतियों से सीखा, और what were the qualities that amazed you with junior officers and senior officers? सी सीनियर ऑफिसर्स आर योर गाइड, ठीक है। उनका जो एक्सपीरियंस होता है, दे टीच यू अ लॉट। तो obviously they are like your big brothers, they are like your father figures sometimes, they are very seniors and age maybe and experience maybe. So obviously at each and every step they are there to help you out, they are there to guide you and show the right path. So as seniors, वो तो उनका काम है, जब तुम सीनियर बन जाते हो तो तुम भी उनको गाइड, अपने जूनियर्स को गाइड करते हो। एंड कमिंग टू जूनियर्स, एज अ सीनियर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने जूनियर को सही पाथ दिखाऊं, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। He is also away from his family, I am also away from my family. When you are on board ship, your ship's company is your family. Your juniors, you have to take your responsibility of your juniors. So as an officer, this is something uh, that you have to set example. उनके आगे आपको example set करना है कि उनको ये लगना चाहिए कि हाँ भाई ये ऑफिसर हैं, ये इनकी तरह बनना है मुझे। I still remember when I was coming out of forces, तो मेरे जो sailors थे, they were like they were so inspired, I would say, they were so close to me. Some of them were saying कि यार सर आपका जो पेपर है ना, लिविंग लेटर है, मैं यहीं फाड़ दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा सर आपको।
So they were very sad and some of them were like यार सर क्यों जा रहे हो ऐसे ऐसे. But वही है उनके है ना आज भी कॉल आते हैं उनके टेक्स्ट आते रहते हैं. And they're very senior, like they are the age of my fathers. Some of them are like juniors, some of them are seniors. तो ये है. तो that you have to make an aura. ठीक है. तो गाइड आपको हमेशा करना भी है और होना भी है. Yeah. Sir, we have Ayush. Yeah, Ayush. Sir, like in all the tri-services we have in Air Force, in Navy, and in Army, we have after you become an officer, you get commissioned, you can volunteer for commando course. So, is there a provision for such in the Coast Guard as well? All right. As of now, Coast Guard में there is no commando force. You cannot join special forces because the requirement of this force is different. It's a peacekeeping force. They are not directly into the fighting zone. ठीक है. But uh, there is a requirement of diving courses. ठीक है. So Coast Guard sends its officers for diving courses along with their naval counterparts. तो जो Navy के officers diving course करते हैं, उसका diving course को आपके लिए भेजा जाता है. If you qualify those tests, तो आपको उसका badge मिलता है. And other than that, the specialty about Coast Guard is that there are some officers who are both aviators and who are both diving officers. तो उनके दो badges हैं and they are called diviators. So they are very unique. वो हवा में भी हैं, पानी में भी हैं. So they are everywhere. So this is something special. So yeah, you can go for diving course, not the special forces. So, one more additional question in this, sir. Yeah, Like, have you ever met Marcos? yeah, And yeah. if you have them, sir, can you elaborate on their physique or on their skills, if you can, sir, if it's okay? I'll say. Marcos are a different breed. See, they are the special forces, right? We had visited their school during our training phase, and believe you me, the level of training they go through is class apart. I mean, special forces are different breed. Okay, and it is not about a physical attribute. I would say there are many non-commandos officers who are like they are having a great physique. ठीक है, उनका endurance भी बहुत ज़्यादा है. Like they are Iron Man. They have done multiple sort of extreme challenges, marathons से ये सब बहुत चीजें की हैं. But see, Marcos का role different है. The only thing is physical attribute आप normal आदमी बना लेगा. But जो mental game है, that is separate. They go through so much of mental challenges and mental training, I would say. उनकी ट्रेनिंग ही इसी तरह से होती है कि उनको सारी अपनी मेंटल लिमिट्स को बियॉन्ड क्रॉस करके तब वो दे गेट द बैच, तब दे बिकम द मार्कोस एंड ऑपरेट इन द वॉर जोन और wherever the requirement is. So yes, Marcos, there are my course mates who are Marcos right now, and different breed, I would say, different breed altogether. All right, sir, I Yeah. got my answer. I got my answer. Any other queries? Any other question? Chalo. All right, Ayush, go ahead. Sir, is it really okay? I'm asking so many questions with you. It's, No worries, buddy, no worries. it's perfectly Please, fine. please go ahead. All right, so like we have our huge Indian Ocean, all right, and so we constantly are seeing like Chinese aggression and so many things. Our resources getting depleted by other countries and so many things. So, should we go ahead and be aggressive as well towards all these, matlab, invasions? I would say, or should we keep diplomatic relations with them? Um, Aggression has different connotations altogether. One mode of aggression is you go and take up the war, okay, which is not a solution. I suggest, I prefer, because whenever two countries go for a war, example Russia and Ukraine, huge number of lives are lost. Those who are killed, they are innocent civilians, unarmed civilians, right? Kids, women, men who have nothing to do with geopolitics, I think. Okay, first thing. Second connotation of aggression is that if someone is invading in your territory, how diplomatically you can answer to that aggression. Recently, you might have seen that our defense minister, when he was interacting with different defense chiefs of defense forces of different countries, he didn't shake hands with the Chinese counterpart. You know, so that is the way how you deal and how you show your aggression. That war हम नहीं करेंगे, लेकिन there are multiple ways in which we can teach you a lesson. ठीक है? Right now, if China is doing the aggression, you can go with the US.
you can do with these bilateral exercises. You can show them that, see, brother, we are going and having closeness with US, we are having closeness with Russia. And if you talk about China, many of us don't know that internally China is very weak. Okay, the Xinjiang province, if you talk about that particular part, something else is going on. Even if you talk about the peripheries across China, तो उसके जितने भी surrounding countries हैं उसकी खुद ही किसी से नहीं बनती है यार. Be it Vietnam, be it Japan, be it related to Senkaku Islands, Paracel Islands, all of them are against China. And what India can do? Simple: be diplomatic, be friends with all these countries who are against China. So diplomacy is a very, very brutal game. So it's not you have always be to have to be aggressive. You can play with minds. You have to be diplomatic. This is what geopolitics is all about. So, like just few days ago, China made the statement that Indian Ocean is not India's ocean, and it has certainly been building several military ports, naval ports on Sri Lanka, and we have also seen this spy ship just near these Coco Islands. So, sir, I was talking about such small invasions, which are like in a way circling India or like surrounding India from all sides. So I'm asking, sir, in that particular scenario, okay, what should we do? Like we are actually getting surrounded in the entire periphery of, in the entire circumference of India. Yeah, see, if you feel that we are getting surrounded by the, say, China is having that strings of pearl wala strategy, no? So it's trying to create bases all across the Indian Ocean covering our country. The best way to do is, again, be friends with those nations who are against China. Say those who are having problems with China, like as I said, Japan is having problem. Be friends with it. You uh, start having those bilateral exercises with Japan. China will definitely think, यार इनका चल रहा है आपस में, तो अभी इनसे पंगा लूंगा तो जापान भी आएगा, ठीक है, वियतनाम भी आएगा, और से जितने भी अपने साउथ ईस्ट एशियन से इंडोनेशिया भी आएगा. सो एवरी नेशन हैज डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज, आई वुड से, जिनको हमें केटर करके ये सब करना है. अब जैसे स्पाई शिप्स हैं, ये आते रहते हैं यार. चाइना का काम ही है ये, आई वुड से. वो उसको ये है कि कहीं ना कहीं किसी किसी के शांति वाले एरिया में जाके, पीसफुल एरिया में जाके थोड़ा बहुत इन्वेजन कर देगा, एंड देन ही विल गो बैक. सो these are things which keep on going on. A lot many things keep going on actually in Indian Ocean, which even normal janta doesn't know about. So I think aggression is not the way, I would say. The only way is to deal with these things diplomatically. You ban something, you forward something. That's the only way. All right. So I actually have one more silly question. Yeah, please. It's like so many times it would have happened like you would have to go on a sale right away on immediate orders. So you may not have certain rations for such a long day. Like just you told us like a 15 days sale you had to guys do. So in that time, sir, do you also guys do fishing along the coast or somewhere where you are going? So ration is like ships sail for 4 days. After 4 days, 5 days, depends on the endurance. कि 4-5 दिन का fuel है, खत्म हो गया. Then again they go for refueling, and again they go for, जहाँ पे refueling होती है port में, then they go for rationing as well. तो वहाँ पे ration भी आता है. Again they जैसे 4-5 घंटे का ration लिया या फिर जितना time लगा, again they go out at sea. So again that depends on the uh, uh, various endurance of the ships. And यही है कि यार एंड्योरेंस के ऊपर डिपेंड करता है. लिया राशन फिर चल दिए, तो ऐसे ये वर्क करता है. Noted, sir. Yes, sir. Sir rightly said that line, enemy's enemy is your best friend. Yeah, It was well said by our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee sir, yeah, during his foreign policy time. Yes, sir. exactly. We have one more query from Yeah, please. PC Hub. So, like Ayush was mentioning, like whether we should become aggressive or not, as India is known for its patience, and we are known for to be very friendly to to be very friendly with everyone. So, can we say that this is one of the major reason that why we do not attack, and rather we protect ourselves instead of attacking? So, can we say this is one of the major reason that as we are known for peacekeeping? No, I would say peacekeeping looks good up to some extent. What happened in Pulwama and what we did after that? Did we keep quiet, or did we do the surgical strike? We did surgical strike because it was required. It was required to give a bold statement to the entire globe
दैट नो, आप ऐसा करोगे तो आप एक मारोगे, हम 10 को मारेंगे तुम्हारे, ठीक है। सो वही है, जुल्म सहना भी गलत है, ठीक है, जुल्म करना भी गलत है। सो हर एक चीज की एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट होता है। उसके ऊपर कोई चीज जा रही है तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट्स एक जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो वर्क्स लाइक डे टू डे एक्टिविटीज। फैमिली में आप जब रिलेशंस देखते हो, वही जियो पॉलिटिकल में भी चलता है। कभी आप ट्राई कंपेयरिंग ऑल ऑफ दैट, यू विल रियलाइज। Okay, sir. Thank you, sir. We have one more query from Nikhilesh Kumar. Yeah, Nikhilesh. Sir, as I'm a serving candidate, sir, you know that there are many classes and cadres are running while on duty or means मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती रहती तो आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम मतलब सही से नहीं कर पाता लास्ट टाइम द सेम थिंग हैपेंड टू मी like we are in the move and the SSB comes and I'm not able to perform well in SSB. So sir, can you tell me about मतलब कि क्या किया जाए ऐसे मतलब हमारे वर्क को मिला के मतलब SSB पे कैसे prepare करें? Okay, Nikhilesh, right now, see, for all of you guys, I can understand being in the service and being a non-NCO is, it takes a lot of guts to first go for the SSB and prepare. I have been there. I know time का issues होता है, लेकिन निखिलेश, थोड़ा बहुत टाइम सी निकालना पड़ेगा। आई वुड से आपको कोई ऐसा नहीं है कि हार्डकोर प्रिपरेशन के लिए मतलब आपको दिन रात लगना है एसएसबी में। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप को समझो। जैसे मैंने बताया टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है, तो उसमें सिर्फ आपको अपने आप को समझना है, बाकी चीज़ों को नहीं। सिचुएशंस आपके सामने हैं, जब भी आप कोई आंसर दो तो उसको उन सिचुएशन से रिलेट करके दो, क्योंकि आप सर्विस में हो तो आपसे पूछा जाएगा कि यार आपका, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे कि आपके सीनियर ऑफिसर्स ने आपको ये ऑर्डर दिया, दो आपके ऑफिसर्स ने आपको ऑर्डर दिया, आप किसकी मानोगे? तो वो चीजें ना आपको बहुत आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो यू हैव टू बी। My phone got turned off. So Yes, sir. Yes, sir. she was there. So we were discussing this Nikhilesh question, sir. Yeah, so Nikhilesh, yeah, I understand यार टाइम थोड़ा कंस्टेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशंस को समझो और आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस पुट अप करने वाले हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड यू विल बी एबल टू आई थिंक फिगर आउट कि कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट है सब। Thank you, sir. Sir, we have another query from Kanchan Yadav. So, yes, sir, I wanted to ask you 16 attempts and you told ki how did you celebrate your success? Your voice is not audible, I think. तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा कुछ। Hello, am I audible, sir? Yeah. Okay, sir, I wanted to ask you told about your journey, like 16 attempts you, and you told it, how did you celebrate your success, like with a normal celebration, and you were elected. I want to ask you, in this long journey, बहुत सारे low points भी थे. So how did you stand on those low points? How did you stand? Low points में see, whenever you are on a journey, obviously setbacks, failures के बाद low points आते हैं. You get bogged down, आपको निराशा हाथ लगती है. I would say your family and your friends play a very important role. They were always there. मेरी family में, mom, dad, whenever I used to call her कि मम्मी नहीं हो इस बार, she was like कोई बात नहीं बेटा, अगले में हो जाएगा, कोई बात नहीं. So that कोई बात नहीं वाला शब्द यार मेरे को आगे चलाता रहा, ठीक है, सेल करता रहा मैं उसी में. Friends were there, good friends, like जिनके मैं बहुत क्लोज था. They were like कोई नहीं यार, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और कुछ कर लेंगे, नहीं होगा तो लास्ट टाइम तक देता रहे, नहीं होगा तो देखी जाएगी. सो उनका जो बैकिंग होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, और किसी भी सिचुएशन में डील करने के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस. सो दोज टू वर दी like family and friends were the reasons behind me moving on. जो मैं चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, those were the reasons. Yeah. And sir, if I talk about like your individual efforts at that time. Sorry? Your individual efforts at that time. Like apart from the friends and family efforts, how did you react on those? Are you asking about the individual approach? Yes. Okay, so my individual approach was only that, only one funda: do not give up.
That's it. That was only the thing that kept on going inside my mind कि यार आज गिव अप कर दिया तो शायद सी अगर मैं 7 8 अटेम्प्ट्स के बाद रुक जाता तो ना जिंदगी भर मलाल रहता कि यार क्या पता मेरा 9th अटेम्प्ट में हो जाता, ठीक है, क्या पता मैं 10th अटेम्प्ट में हो जाता, क्या पता मैं लास्ट अटेम्प्ट में हो जाता. सो आई वाज लाइक यार लास्ट में ना एक मलाल नहीं रखना चाहिए लाइफ में कि यार मैंने ये नहीं किया, ये मैं कर सकता था. So that is the thing that helped me out. So I gave my best. I gave my everything आखिरी attempt. So that was my individual approach to my last attempt. Okay, okay, sir. Thank you. Any more queries? I think, sir, we took a lot of your time. The session went 37 minutes extra No session. worries, no worries. Yes, sir. Yeah. I think when my phone got switched off. Yes, yes, sir. And sir, from the bottom of our heart and from the whole cult SSB team, it was a really great session, and it was a really great to have you on board because a lot of conception, lot of myths, and as a young dynamic officer, sir, you were really great in solving most of the queries, and I guess all of the queries, sir. Not most, because you have handled each of the query in a proper, detailed way. So thank you so much, sir, for coming today on the day 3 of our grand 7-day workshop program. And sir, we are expecting you again to have you again on a very grand session with a joint officer session someday soon, sir. And sir, thank you so much, sir, from everyone. Sure. Thank you so much, sir. Really, thank you so much, sir. Sure. Yes, Wishing yes, sir. you all, very good luck. And I would only say, be the good citizen of India. Be honest, be humble, be grounded. Love your family, love your parents, and love nature. That's it. So that's it from my side. And would love to see you all soon in uniform. Do good in life. Best of luck. Yes, sir. Thank you so much, sir. All Good day, right. sir. Bye bye. Bye bye. Good See you. night, sir. Jain, sir. Thank you, sir. All right, guys. So